Try this one. So 96. Yes, you Yes, sir. have. Yes, 96. 96. That's correct answer, 96. और ऐसे केस में मोस्टली यही होता है that if you see whatever answer is given to you, आपको उसको -2 करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, you'll get the answer. So and more, it was an I guess NAT. Yes, option नहीं है, so it was an NAT kind of thing. इस टाइम पे तो NAT नहीं आया था. So Z plus 1 by Z square is equals to 98. You have to simply put the identity of A plus B whole square. So A square plus B square plus 2 into Z into 1 plus Z. This is 2 is equals to 90. So Z 1 by Z cancel हो जाएगा. I'll get Z square plus 1 by Z square equals to 96. A simple question. Is next one. This is a time consuming question, but I hope you can do it simply. Hundred. 100, sir. Let's see what can be the answer. So you have to find out the average of all the multiples of 10 from 2 to 198. So basically number table of 10 start with 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, then 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, and 190. You can simply find out the sum. Sn goes like n by 2, a plus l, first term plus last term. Right. Number of terms you can find out. You can simply calculate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19. 19 by 2. First term a, second term 190, so it will become 200. Simple. 19 into 200 by 2. Sum will be 1900, and you have to find out average.
So 1900 by 10, 180. The correct answer. So divide by 19 Sorry, होगा ना? sorry, 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 sorry. Yes, it will be divided by 19. 19 ना? हाँ हाँ हाँ. That's a mistake. So correct answer will be 100. Okay. Next one. ये 2014 1 मार्क क्वेश्चन. ये क्वेश्चन उठाया गया है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से. फर्स्ट यस इरेशनल नंबर्स. Four. 4. ओके दैट्स करेक्ट यस. कैसे हम सॉल्व करते हैं? वी अज्यूम इट टू बी x और y. यू कैन टेक x. x इक्वल्स टू अंडर रूट 12 plus under root 12 plus so on. The series goes on. Then you take the square, so it becomes x square equals to 12 plus under root 12 plus under root 12 plus so on. Now this 12 is there. The rest of the part is similar to the earlier one, so you'll substitute by x, so it will become 12 plus x. Or this equation becomes x square minus x minus 12 equals to 0. Just have to find out the roots of this equation. X square minus 4x plus 3x minus 12 equals to 0. X minus 4 plus 3 x minus 4 equals to 0. So x plus 3 x minus 4 equals to 0. So this gives you x equals to minus 3 or 4. Here minus 3 is the 4 is the correct answer because minus 3 is not there in the option. Yes, sir. So the next one, pretty simple question. $64. Yes, that's correct answer. Good. Yes, sir, 64. Okay, सिंपली गैस करना है. यू हैव टू जस्ट गैस इट. सो 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का है, 7 3 5 7 9 11 13. यहाँ पर 15 का होना चाहिए. तो करेक्ट नंबर शुड बी 65 नॉट 64. So 64 is incorrect over here. Try this one.
C 3.02. Okay, let's see what can be the correct answer. So, question is lengthy. Yes, obviously, question is lengthy, but answer is pretty simple over here. So it shows you question-wise data of the performance of the students in an exam. Marks for these questions are also listed. There is no negative or partial marking, and you have to find out the average marks obtained in the by the class in the exam. Okay. So what it will be is somewhere over here. Question number 1 कितने हैं, आंसर्ड करेक्ट कितने हैं, आंसर रॉन्गली कितने हैं, नॉट अटेम्प्टेड कितने हैं. तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, मार्क्स और उसके कितने करेक्ट आंसर है ये हमें दिया हुआ है. सो हमें पता चल जाएगा कितने मार्क्स. लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स कितने हैं. 2 इंटू 21 प्लस 3 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 23. दैट इज व्हाट ही एक्चुअली कैलकुलेटेड ओवर हियर. अब सेकंड चीज हमको क्या देखनी है यहाँ पर, that is the total number of students. Now how we'll find out total number of students? So either they can correct answer, so I can give either they can give correct answers or they can give not wrong answers or they will not attempt the question. So हम तीनों को अगर ऐड करते हैं in any of the case you will get 44. 44 and 44. So total number of students is 44. So if you solve this you'll get the final answer, and that is correct. 3.02 will be the correct answer. So it will be 133. 133 by 44. Right. So 3.02 correct answer. This one. अभी हमने क्लास में कवर नहीं किया, बट आई वांटेड टू टीच यू दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं. D. Samantha C. Panasara. Okay, let's see what can be the answer. Yes. All women are entrepreneurs. So women, see how do we solve this one? The most common technique that we actually use is Venn diagram. अगर आप वेन डायग्राम समझ लेते हो, इसमें वेन डायग्राम यूज होते हैं, एंड इफ यू सॉल्व इट बाय वेन डायग्राम यू विल गेट 100% करेक्ट आंसर. ठीक है, खाली आप वेन डायग्राम अच्छी तरह बना पाओ तो. So all women are entrepreneurs. So women I have women D आएगा and सही है. all women are inside the bracket of entrepreneurs. Right. And some women are also doctors. So some women are doctors. So I'll take this part over here and this will go over here. ठीक है, some women are doctor, that is clarified over here. और बाकी थोड़ी women है जो डॉक्टर नहीं भी. They can be entrepreneur, they cannot be entrepreneur as well. So this is how you have to understand this one. So this will become doctor. Now only two statements are there. वैसे तो 5-6 statements दिए जाते हैं, पर यहाँ पर 2 ही statement दिए हुए हैं. So you can pretty simply solve this one. All women are doctor? No. Some women are doctors, some women are not doctors. So this is incorrect. All doctors are entrepreneurs? No. Some doctors are entrepreneurs. Rest of the doctors are not entrepreneurs. This is also correct. All entrepreneurs are women? No. All entrepreneurs are not women. You can see some of the diagram going outside the women, which are some entrepreneurs are doctors. Yes, especially those women which are doctor as well as entrepreneurs, right? So this particular thing shows that some of the doctors are going to be entrepreneurs, some of the entrepreneurs are going to be doctors. So this is the correct answer. It will look like a little bit of lengthy process, but अगर आप Venn diagram से करते हो, so at least at most और वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं इसी के अंदर, इसको हम सिलॉग्स बोलते हैं. सिलॉग्स, ठीक है, सिलॉगिज्म. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रीजनिंग का, और रिसेंटली काफी ज्यादा ट्रेंड में गेट के अंदर. तो ये एक बार हम देख लेंगे और भी एग्जांपल जो भी आते हैं, और वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वेन डायग्राम जो है दिस इज द बेस्ट टेक्निक विद द हेल्प ऑफ व्हिच इट कैन बी सॉल्व.
दिस वन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एक्चुअली तो देखकर ही हो सकता है. K. Yes, that's correct. K. The lowest standard deviation. The lowest standard deviation. So this is the most consistent. अभी ये क्वेश्चन सही टाइम पे आया. इंडिया has lost the match today also. So बहुत सही टाइम पे क्वेश्चन आया. So we are not talking about India. We are talking about some other batsmen. Their average and their standard deviations. So lowest standard deviation आ रहा है मतलब यहाँ से क्या ये consistent performance दे रहा है and it is not deviating over here. Okay. This one. Again an interesting question. Only for 1 mark, but अच्छा question है. $725. Okay, I got one answer is 725 Sir, 472. or 72. Okay, so let's look into this. Difference 23. यहाँ पर डिफरेंस आएगा आपका 46. यहाँ पर डिफरेंस आएगा 292. यहाँ पर डिफरेंस है 472. 185, 187, 184. तो हमेशा डबल होते जा रहा है. 23, 46, 92, 184. नेक्स्ट डिफरेंस विल बी 368. राइट. सो इन दोनों को मेरे को ऐड करना है. ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? It will become 5 to 7. So 725 करेक्ट आंसर. ये ट्रेंड देखना जरूरी है कि आपका यहाँ पर ही डिफरेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है लेकिन किसी किसी केस में हो भी जाता है. यहाँ पर डिफरेंस भी इंक्रीज होते जा रहा है. If you don't increase the difference, you will just add 23 and ये आंसर आएगा. उस टाइम पे आपका आंसर गलत हो सकता है. ठीक है. So, pretty simple question but has been asked in GATE exam. Now next one. Just one. Yes, next one.
45. Okay, let's see what is the answer over here. So over here, if you see the difference, it's 1, 3, 9, and over here there is some difference, or the some other difference over here. What it will be? So is there any relation between 1, 3, and 9? No, it's there is no difference. Right. So we'll take it another way. हम इसको रेशियो से करते हैं. So what is the ratio of 3 by 2? 1.5. ये 2. If you find out 15 by 6, it will become 2.5. Next ratio is going to be 3. It will turn 45. Yes. And यहाँ से ratio होना चाहिए 3.5. So 45 into 3.5 करके देखिए, you will get the correct answer. Right. So in this way, this ratio holds true. So correct answer will be 45. And the series holds true. Let's see next one. Twenty-four. Yes. Let's look into what can be the correct answer. So 81 minus 54, you'll get 1781. So 30, 27. 27. Yes. 36, ये 18 आया, ये 12 आया. 12, 18, 27, all are a factor of 3. ठीक है. रेशियो अगर मैं निकालता हूँ, so can I get some ratio? 9, 6, 9, 6, so 3 by 2. 54 by 36, 3 by 2. 36 by 24, 3 by 2. 24 by x is going to be 3 by 2. Correct answer will be, if you solve this one, you will get 24 into 2 by 3. That is your 16. Next answer is going to be 16. So difference है ना, इससे अच्छा यहाँ पर रेशियो से आंसर आ जाएगा. This one, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, just give it a try. D. Yes. See, इस क्वेश्चन की अगर एक ए ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, तो m is less than r. So यहाँ से मुझे पता चल रहा है, देखो r ऊपर है और उसके नीचे मेरे पास m है, because r is greater than m. R is also greater than p. So this does not means that p is less than m. ये ऐसा जरूरी नहीं है. So cannot be said. Second one, again s नीचे है, s से ऊपर m है, s से ऊपर p है, but there is no relation between p and m given. So cannot be said. C, हमको इतना दिया हुआ है, m is less than f which is equals to p. So m तो छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, m बड़ा दिखाना है. तो C cannot be there. अगर D की मैं बात करता हूँ, तो मुझे दिख रहा है P which is equals to A, उसके ऊपर हमारे पास है R, हाँ उसके ऊपर है M. So which shows that M is greater than P. So correct answer will be D over here. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Only thing is you just have to give it a look. यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स क्या हुई थी कि ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर लगा कि भाई M और P के बीच में डिफरेंस है. इन पहले दो ऑप्शन में तो पता नहीं चलता, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल. यहाँ पर हमको पता चलता है कि भाई M जो छोटा है, बट वी एक्चुअली डोंट सी कि भाई हमें क्या प्रूव करना है, P इज लेस देन M और M इज लेस देन P. So we just use this one, we mark this one as correct one. ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया.
Next one. The 475. Okay, let's see what can be the answer. So in a sequence of 12 consecutive odd numbers, the sum of first five number is 45. ठीक है, so हमारे पास 12 consecutive odd numbers हैं. So and I have been given the first data, the first five numbers. So I'll use this data only. तो मैं ऐसा मानता हूँ that a minus 4, sorry, a minus 4, yes, a minus 2, a plus 2, and a plus 4. These are my five consecutive odd numbers. The sum of first five numbers, if I add them up, see यहाँ पर plus 4 minus 4 cancel हो जाएगा, plus 2 minus 2 cancel हो जाएगा, I'll get 5a. So 5a is going to be equal to 425. So a is going to be equal to 85. Right? So this is your third number. ठीक है, तो सीक्वेंस आपका कैसे चालू हो रहा है? 81, 83, 85. Third number. Then 87, 89. How many numbers are there? There are 12 consecutive numbers. इतना हो गया. 91, 93. Then 95, 97, 99, 101 and 103. ये लास्ट फाइव नंबर्स हो गए मेरे पास. ओके, सो मेरे पास लास्ट फाइव नंबर्स ये मिल गए. अब इसका मुझे अगर सम निकालना है, सो व्हाट आई कैन डू इज, जो 5 नंबर है इसमें जो बीच वाला टर्म है, आई विल टेक इट वन, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 5. सबसे सिंपल तरीका ये. सो 450 प्लस 45, दैट विल बी 495. राइट, 495, 475 नहीं, 495 आना चाहिए आंसर, आई गेस. Yes, sir. हाँ सर. ओके, 495 इज द आंसर. सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देयर इज नथिंग टू डू मच ओवर हियर. नेक्स्ट वन. A. Okay, let's see what can be the answer. So हमको दिया हुआ है that p is equals to x raised to n and m raised y raised to m. A is the answer, sir. A, yes, that is going to be correct. Yes. So if x is doubled, so it becomes 2x. So p dash will be your 2 into x raised to n. Y is halved, so it will become y by 2 raised to m. Right. So if you take it out, 2 raised to n, x raised to n, 1 by 2 raised to m, y raised to m.
So this will become 2 raised to n minus, sorry, minus नहीं, 2 raised to minus n, x raised to n, y raised to n. तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा p और ये हो जाएगा 2 raised to n minus n. So I is going to be the correct answer. Right, A is going to be the correct answer. Next one. One lakh 30,000. 13 lakhs. Okay. Okay. Is my screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. 800 into 100, right, sir? Yes. 50,000 plus 800 into 100. Yes. 800 into Q. Quantity is 100 tons. Right. So daily production in tons. That is 100. So what is the cost of production per ton? That is an important thing you need to understand, right? So you have to find out the cost of production. This is going to be total cost, right? Total cost, right? Then if you want to find out per ton, total cost per ton will be divided by number of tons produced. So that is 100. You may get the answer 1,30,000, but that has to be divided by 100. So it will become 1,300 rupees. This is going to be a final answer. Total cost Yes. of production per ton. Okay. Try solving this one. This is going to be the last question for today.
3 to 4 years. Okay. So let's see how this can be solved. The population of new city is 5 million. It is growing at 20% annually. We had to identify in how many years it will take to double this growth. सिंपली हम इसको मैन्युअली सॉल्व करते हैं. सो 5 मिलियन इनिशियल है. इन फर्स्ट ईयर इट विल बिकम 5 इंटू 20% इंक्रीज है मतलब 6/5, राइट. 20% इज 1/5, so new will be 6/5, so it will become 6 million. In second year it will become 6 into 6/5, so 36 by 5, which is 72, I guess 7.2. In the third year it will become 7.2 multiplied by 6/5. Solve it, 8.64. you will get 8.64. In the fourth year you'll get 8.64 into 6 divided by 5. 10.368. 10.33. तो जब थर्ड फोर्थ ईयर हो जाएगा उसके बाद से फोर्थ से फिफ्थ ईयर में जब जा रहे होंगे इट विल क्रॉस डबल. द करेक्ट आंसर विल बी 4 to 5. Sir, it should be 3 to 4, na? Because in fourth year already it has exceeded 10. And actual it is 5. So 5 to 10. So it should be actually 3 to 4, na? Because in fourth year it is already exceeded. Just 1 minute. Yes, it should be 3 to 4 because yes, at the while going from 3 to 4 it will cross this 10. At the end of fourth it is 10.368, so it at 3 to 4 years, yes, it will cross 10. So yes, correct answer would be A rather than B. Yes, correct. Thanks for correcting. Fine. This is the last question we are going to discuss today. Rest we'll see in the next lectures. Right, so we'll keep it up to here. If you have any doubt, you can ask, or you're free to leave. Thank you. Okay, let's start with the session. आज भी हम गेट के क्वेश्चंस कवर करेंगे. 2014 तक के क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, आई गेस. लास्ट क्वेश्चन जो देखा था, दिस वन, यस, ये देखा था हमने. तो वहीं से आगे चालू करते हैं. we'll cover the maximum number of questions possible today. So let's continue with the 2 marks questions of Gate 2014. I'll give you 2 minutes to solve. If you can solve it, then it is fine, or else we'll discuss the solution.
Okay, I got one answer in the chat box. 855, sir. Okay, let's try to understand कितना होगा आंसर, कैसे आएगा आंसर. So round trip tickets to the tourist destination are eligible for a discount of 10%. Right, so there is a discount of 10% on the round trip. In addition, if the group of four or more get a discount, in addition, groups of four or more gets a discount of 5% on the total fare. The total fare. This is an important thing. This is 10% on the total fare plus 5% on the total fare. If one-way trip of single person fare is, if the one-way single person fare is 100 rupees, a group of five tourists purchasing a round trip tickets will be charged. So 5% and more than four, so they will be eligible for 5% discount, and round trip hai, so they will be eligible for 10% discount. So total discount will be 5 plus 10, that is 15%. Total 15%. Simple. Now, one way single person fare is 100. So round trip का fare हो जाएगा 200. Round trip mhm, per person is equals to 200 rupees. Further, if you talk about five tourists, the total fare for five tourists will be 1000. Right. So discount is 15%. So basically 15% less than 1000 rupees. So yes, it will be almost 85% of 1000. So simple, the maths is 85 by 100 into 1000, which turns out to be 850 rupees. Right, these two terms are important over here on the total fare. ठीक है, तो जो भी डिस्काउंट मिल रहा है वो टोटल फेयर पे मिल रहा है. अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता दैट इफ यू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट, if they get an additional discount of 5% on the remaining fare, तो वहां पर अब अपना जो आंसर होता है वो चेंज हो जाता. Then we have to find out the 5% of the remaining 900 rupees जो 10% देने के बाद मिलता है. Right. In that case the answer might have changed. सर ये 200 वाला पता नहीं चला. ये वाला ओके. सी वन वे ट्रिप का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, वो है ₹100. तो टू वे ट्रिप जो होती है उसको हम राउंड ट्रिप बोलते हैं कि जाकर वापस आना. So it will be 100 going and 100 coming back. So ₹200 it will be. 2 into is 100. ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है वन वे सिंगल पर्सन पे. Okay, let's see the next one. Again, a question related to DI. Try to solve it up.
Okay, so I got the answer 48%. Let's see whether it is correct or not. So in a survey, 300 respondents were asked whether they own a vehicle or not. If yes, they were further asked to mention whether they own a car, scooter, or both. The responses are tabulated below. What percent of respondents do not own a scooter? तो स्कूटर ओन नहीं कर रहे हैं लेकिन बाकी सब चीजें ओन कर रहे हैं लाइक कार कर रहे हैं एंड ओके एंड बोथ कर रहे हैं ठीक है तो these two things are there and again do not जो आएगा that will also be added over here. This way we can do it. This one. Okay. Now what we can do is if they are they're not owning scooter, they're not owning both. So ये चीज तो हमें consider नहीं करनी है यहाँ पर. So we had to find out the P percentage of respondent who do not own scooter. So do not own a scooter की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर मैन कितने होंगे हमारे पास they will be 40 plus 20 because they can't own both if they don't own scooter so वो तो चीज यहाँ पर आ ही नहीं रही then similarly women it will be 34 plus 50 so it will become 60 plus 84 so our total of तो इसको मैं ऐड करता हूँ it will become 144 right now how many people were asked altogether so if you calculate how many people were 300. asked yes that's correct you have to add this one we get 300 total अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है you don't have to add it it has been given total responses 300 therefore percentage will be 144 over 300 which turns out to be 48%. Correct. Next one.
Yes, can I get some answers? Let's try to solve this one. If x is real, so there is no imaginary part over here, and mod of x squared plus 2x plus 3 is 11, then the possible values of mod of x minus x cube plus x square minus x include, you have to find out the answer. So what I'll assume is, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, first of all remove the mod. Right. सबसे अच्छी चीज यही है, आप mod को remove कर दो. Now try to find out uh, the solutions over here. So what it will become, 2x minus 8, I guess it will become 8. Further, it will become 4x plus 2x minus 8 equals to 0, which will become x minus 4 plus 2 x minus 4 equals to 0. So x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x plus 2 x minus 4 0, and hence x equals to minus 2 and 4. I got two answers for x. Right. Now let's substitute these answers onto the given equation. So पहले मैं लिखूंगा x equals to minus 2 minus 2. So the value of minus x cube plus x square minus x, and इसका पूरा mod. This will be equal to minus of minus 8 plus 4 minus minus 2. This will become 8 plus 4 plus 2, that is 14. So one of the value is 14. I am closest to my answer. ये दोनों option नहीं हो सकते. Now second one, x equals to 4. Again, minus of minus 4 cube plus minus 4 square minus, sorry, it's not minus 4, it's plus 4. Plus 4. That will become minus 64 plus 16 minus 4. So ultimately what you'll get is 64 minus 16, 48, minus 48 52. minus, you'll get the absolute value, so it will become 52. So 14 and 52. The correct option will become D. Simple question है. Yes, it may create confusion कि क्या करना है, कैसे करना है, but just 1 minute. Okay, just 1 minute. This question was pretty simple. The only thing you need to understand is हाथ पैर मारने पड़ेंगे थोड़े. So you can try avoiding this mod and solve it. If you do it like so, you'll get the answer. You'll get closer to the answer. Next one, related to DI.
Okay, let's see how we can solve this one. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स इट. The ratio of male to female students in a college for 5 years is plotted in the following line graph. The number of female students doubled in 2009. In 2009, number of female students, they were doubled. By what percent is the male students increase in 2009? First of all, we have to understand. We'll start from 2008 over here. So male to female ratio. If you look into the line graph, you can see that it was 2.5. Right. Okay. Let's see what is the answer. So male to female ratio is 2.5. So male is going to be 2.5 times female over here. First. Secondly, in 2009. Now, I don't know the number of female students increased. Sorry, male students increased. That is what I need to find out. फिर हम उसका percentage निकालेंगे. But I know the female students they were doubled in 2009. So they became 2f, and the ratio was in 2009 the ratio was 3. Right. So the number of male students they became 6 times f. बस मेरे पास हर चीज आ गई. I have the reference. This is your first equation. This becomes your second equation. You have to find out the increase. Therefore, percentage increase in male students, it will be equal to m dash minus m upon m into 100. If you see the equation, 6f minus 2.5f upon 2.5f. अब यहाँ पर जो f जो टर्म है ना वो हो जाएगा कैंसिल. Right. Although I have calculated everything in terms of f, it will get cancelled. Right. So 3.5f over 2.5f into 100. So what answer will be getting over here? वन 40%. Yes, correct. Very good. 140%. सर ये ऐसा थोड़ी बोला है कि हमको 2008 के रेफरेंस में लेना है, तो हम तो डायरेक्टली 2009 में अगर फीमेल डबल हुई तो सेम रेशियो रखने के लिए मेल को कितना इंक्रीज करेंगे, वैसे भी तो कर सकते हैं ना. एक साल के अंदर डबल नहीं होगा ना. कौन से रेफरेंस में डबल हुई है? तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स के रेफरेंस में डबल होगा, क्योंकि हमें रेफरेंस तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है. हाँ, तो हमें ये क्या देना होगा? पिछले वाले साल के टर्म्स में इस साल डबल हुआ है, इसके लिए रेफरेंस 2008 से लिया गया. हाँ सर. Let's see the next one. Now this is an interesting question. Try to find out the answer. Yeah. Bavi. Okay, that's correct. A is the correct answer. Okay. Let's see how we can do this. Before that, I'll just give you a shortcut trick. ये clock, although we haven't covered it in the class, लेकिन इसमें कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं कवर करने लायक.
सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो हमको याद रखनी है, एंड देयर इज दिस सिंपल क्वेश्चन इज विच इज बीइंग आस्क्ड। एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खाली जो चीज पूछी जा रही है वो अलग अलग होती है। द एंगल, सो एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, किसी को पता है शॉर्टकट? इट्स theta equals to, like, angle which is usually measured in theta, it is equals to 30, sorry, 11 by 2 m minus 30 h. I have this actually a mod value होती है, anyways it doesn't make any difference. So 30h minus 11 by 2 m, where h is your hour, m is a minute. ठीक है, तो ये जो भी आंसर आता है that becomes your angle between the hands of the clock. And अगर आपको external angle निकालना है, you have to separate it by 360 degree. So this is a shortcut that you need to remember. कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी हो, if it is about the angle between the hands of the clock, you can solve it directly over here. अब in this case, the angle is given, that is 60 degree. Let's try to solve this up. 60 is going to be equal to 30 into h. Now, what is h and m? H means hours and, right? Hours and m means minutes and. Right. So अब मुझे पता है कि hours and जो यहाँ पर है, if it is talking about 6 a.m. and 7 a.m. so hours और and ने 6 a.m. close कर दिया है. So I'll just multiply it by 6. But minutes कितने cross किए that I don't know. So I'll just keep it m. If you solve this equation, you get 160 minus 180 is equals to 11 minus 11 by 2 m, which becomes minus 120 is equals to minus 11 by 2 m, or m will become 240 by 11, which is 21 point, what it will be, 81. 8, yeah, 81 something. So which is almost equivalent to 22, right? So 22 minutes have been passed, and 6 तो पहले से था ही हमारे पास, so 6:22. The correct answer will become 6:22 am. This is a shortcut trick and it is useful at lot of questions. So अगर clock का कोई भी question आ रहा है, luckily if it comes, ये अगर आपको याद है, so it won't take hardly 1 minute to complete the question. ठीक है, just okay. Now let's move on to this one. Simple one but interesting question. B. Yeah, that's correct. So dance program is scheduled at 10 a.m. Some students are participating in the program and they need to come an hour earlier. So from here, what I can deduce is they had to come an hour earlier than the start of the event. Further, these students should be accompanied by parents. So participants at an hour earlier means 9 a.m. with their parents. Right? The first conclusion. The second conclusion is other students and parents should come in time of the program. यहाँ पर जो दिया से बता रहा है all students, all others at 10 a.m. जो प्रोग्राम का टाइम है. So participating students should come at 9 a.m. accompanied by the parent, and other parents and students should come by 10 a.m. So this is the correct answer. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये मेहनत होनी चाहिए कि भाई पूरा पढ़ सकें. 2 मार्क्स, ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है.
तो इंग्लिश में एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अगर क्वेश्चन आते हैं, यू डोंट हैव टू मिस दिस चांस, ठीक है, अच्छा स्कोरिंग वाला होता है, तो यहाँ पर छोड़ना नहीं होता हमको। नेक्स्ट वन, दिस इज अ डिजर्विंग क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स डिजर्व करता है, ट्राई टू फाइंड इट आउट। सर ऑप्शन ए। जस्ट अ मिनट, विल सी व्हाट इज द यस correct सर, answer. ऑप्शन है, ऑप्शन है। Okay, so I don't know what your approach is, but yes, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूँ। कि वो हम ऐसे क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हैं, लाइक जहां पर हमें बहुत सारा डिफरेंस हो और बहुत सारा कैलकुलेशन करना हो, तो वहां पर हम एक शॉर्टकट ट्राई कर सकते हैं। शॉर्टकट बेसिकली इट मीन्स टू सेव योर टाइम। तो कभी भी अगर आप किसी बुक को रेफर कर रहे हो या किसी रेफरेंस को रेफर कर रहे हो, किसी वीडियो को रेफर कर रहे हो, तो वहां पर शॉर्टकट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट डू नॉट रिलाई ऑन शॉर्टकट्स, दैट इज व्हाट माय एडवाइस। कि कभी भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, किसी एक चीज के लिए आप शॉर्टकट पे रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आप उसको यूज कर सकते हो, यू कैन सेव योर टाइम, it will save your time. So shortcut is simple thing, EJOTY. What does it mean? E comes at the 5th place, J comes at the 10th place, O at 15th, T 20 and 25, ठीक है, ये प्लेस नंबर है हमारे अल्फाबेट्स के। सिमिलरली CFILOREX, ये जो चीजें हैं दैट कम्स एट द फैक्टर्स ऑफ 3, 3 6 9 12 15 18, सर यू आएगा ना? स्टेफिलोरस, 24। तो ये जो चीजें हैं, ये शॉर्टकट्स हैं, हम क्विकली याद रखने के लिए यूज करते हैं। अब इसके आगे पीछे नंबर हमको याद रहेंगे, तो अगर मैं पहले की बात करूँ, WEKO, इट विल बिकम WX 23 हो जाएगा। ये तो हमारे पास है ऑलरेडी 5, KL 11, O 15, ठीक है। सेकेंड IQWA, अच्छा इसके बीच में कॉमन क्या है, रेफरेंस क्या है, वो मैं बाद में बात करता हूँ, तो पहले हम ये देख लेते हैं। I हो जाएगा मेरे पास 9, Q will become, R है 18 पे, तो Q 17, 17। again W आया, 23। W वापस 23 and E is 1, then F and TX, F हमारा 6 है, N हो जाएगा हमारा, O से हम निकाल सकते हैं N 14, T हो जाएगा 20, X हो जाएगा 24, N NVBD, तो N नहीं है, N 14 है, वी हैव एक्चुअली चेक्ड इट। V जो हो जाएगा वो हमारा 22 हो जाएगा, B2D 4, दैट्स करेक्ट, यस। सो अगर लास्ट दो के डिफरेंस की बात करो, वैसे तो हम सब चेक कर सकते हैं, पर लास्ट दो के अगर आप डिफरेंस देख रहे हो, तो यहाँ पर आ रहा है 11 प्लस 4 15, 23 प्लस 4, so 24 25 26 and 1, इट्स करेक्ट। 20 प्लस 4 24, यहाँ पर हो जा रहा है 2, ठीक है।
दिस इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट। आगे की बात करते हैं, बाकी चीजें भी देख लेते हैं। तो 5 + 6 11, 17 + 6 23, 14 + 6 20, 22, 23 24 25 26, 4 + 2। ठीक, ये 6 आ रहा है, ये चारों में सेम है। Now 23 plus 8, if you see, 24 25 26 and 5, 8, 9 plus 8 17, 6 plus 8 14, 14 plus 8 22. So 864 864 864 यहाँ पर आ रहा है 862, NVBD, D is going to be the correct answer. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड अ डिजर्विंग क्वेश्चन। दिस थिंग जस्ट अ शॉर्टकट फॉर यू टू रिमेंबर, इफ यू कैन रिमेंबर इट, राइट। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बट हाँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, इट कैन सेव योर टाइम and efforts also. One आप हर एक को कैलकुलेट करने बैठोगे अगर फिंगर में, there are high chances that you will make certain mistakes over time. Right. So this is just a short trick to remember numbers. Now, what as a homework you can try as a homework, try to make the short numbers of your name. Right. तो आपको अगर आप वो प्रैक्टिस करोगे तो it will make you to understand कि भाई कैसे quickly हम इसको याद कर सकते हैं. So whatever your name is, try to make the short numbers of those names. और उसको भी एज अ पासवर्ड ईमेल में यूज किया जाता है बहुत जगह। नेक्स्ट वन, सर ऑप्शन ए। okay, let's see. See, this comes under the topic of data sufficiency. ठीक है, ये डेटा सफिशिएंसी के अंदर आ जाता है कि आपके पास कितना डेटा दिया हुआ है और वेदर इट इज सफिशिएंट, वेदर इट इज नॉट सफिशिएंट। अगर सफिशिएंट है तो किस चीज के लिए, दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई। So let's try to solve this one. For submitting tax returns, all the resident males with annual income below 10 lakh should fill up form P. तो P के लिए क्या है एलिजिबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेल, ठीक है, यहाँ पर मैं जेंडर लिख दे रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं इनकम लिख दे रहा हूँ। तो जेंडर मेल, इनकम लेस देन 10 lakh, then all the resident females, अच्छा यहाँ पर रेसिडेंट भी है, राइट। सिमिलरली फॉर क्यू, फीमेल, रेसिडेंट, income less than 8 lakhs, so 8 lakhs. All people with income above 10 lakhs should fill form R. So R किसके लिए है? For all, so male plus female plus others also. If they have greater than 10 lakhs, right, so they should fill up the form R. Except non-residents, except non-residents with income, अच्छा ये सब रेसिडेंट के लिए अगेन, and S is for male plus female plus others non-residents greater than 15 lakh, right. So ये रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए, right. All others should fill form T. So टेस्ट T जो है वो रेस्ट ऑल, ठीक है, सबके लिए। So this is what we have actually got out of here. Let's try to find it out. So first one, a resident male with annual income 9 lakh.
एनुअल फीमेल, ओके, फीमेल के लिए ग्रेटर देन 10 लाख दिया हुआ है और लेस देन 8 लाख दिया हुआ है, तो 9 लाख बीच में आता है, तो ये आएगी डी के लिए। नॉन रेसिडेंट मेल विद एनुअल इनकम 16, तो 15 से ऊपर नॉन रेसिडेंट जो होगा उसको एस भरना है, तो गो टू एस। नॉन रेसिडेंट फीमेल विथ एनुअल इनकम 16, so इनके लिए भी एस आएगा। ऑल द नॉन रेसिडेंट्स दे हैव टू फिल एस। तो टी का एग्जांपल सिर्फ एक ही है, बी, so बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन लुक इनटू द मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, so deserving one, that's what I can say. Let's go on to the next one. ऐसा एक क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया हुआ है इससे पहले, try to solve this one. Yes, anybody with the answer? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको 2 केसेस करने हैं। एक केसेस में मैन, द मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और दूसरे में मैन प्लस द लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। 840 मीटर सर। Okay, let's see what can be the answer. Okay, 840 देखते चलो, ये आता नहीं आता। So a train is 280 meter long. Train is 280 meter long. So length of train is given 280 meter. It is traveling at uniform speed, crosses the platform in 60 seconds. अच्छा, ये मैंने आपको बताया था। Let's say there is a train. So, and there is a platform over here. और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है। तो व्हेन इट विल बी कमिंग टू द प्लेटफॉर्म, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट गिना जाएगा, एंड जो एंडिंग पॉइंट होगा, व्हेन इट विल से दैट इट विल क्रॉस द प्लेटफॉर्म, उस टाइम पे ट्रेन जो होगी वो पूरा क्रॉस कर चुकी होगी। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये तुम्हारा बिगनिंग पॉइंट है, दिस इज योर बिगनिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट। So when the train crosses the platform, it is covering the length of train plus platform। ठीक है, क्रॉस करने के लिए इनको जो लेंथ ऑफ ट्रेन है प्लस द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये दोनों कवर करना पड़ेगा, राइट। सो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस। नाउ फर्दर इफ यू टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म ओनली एंड देयर इज मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेन जो थी इट विल कवर इट्स एंटायर लेंथ। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था जब मैन को क्रॉस किया, और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट पे क्या होगा, इसका जो ट्रेन का जो एंड होगा ना, वो होगा। तो बेसिकली व्हाट हाउ मच डिस्टेंस इट इज कवरिंग इन ऑर्डर टू क्रॉस द मैन, इन ऑर्डर टू क्रॉस द मैन इट इज कवरिंग लेंथ ऑफ ट्रेन। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है यहाँ पर, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल है। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर दिस 20 सेकेंड। सो ये 20 सेकेंड टाइम लग रहा है, ट्रेन है, लेंथ है 280 मीटर, सो 280 मीटर कवर करने में इनको लगे 20 सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज विल बिकम
140 meter per second. Now this is the speed of train. Now with this speed of train, अगर वो 60 सेकंड के लिए चलती है, so distance covered in 60 seconds, it will be speed into सर distance equals 14 to मीटर speed पर into time. सेकंड 14 मीटर पर Sorry. सेकंड 14 मीटर पर Okay. सेकंड Yes. Yes. 40 meter per second. Okay. So with its 40 meter per second, in 60 seconds, it will cover 840 meters. Now, ये 840 meters है, it is the summation of length of the train and the length of the platform. ये चीज हमको समझनी है. Right. So जो distance cover किया है, this distance which is covered in 60 seconds, it is equals to length of train plus length of platform. So 840 meter is equals to 280 meter plus length of platform. So यहाँ से length of platform को मिल जाएगा which is 560 meters. Right. Interesting question. There are high chances that we can make mistake over here. But ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में कवर किया हुआ है. So look into that part also. और ये ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना है. Next one. सर 2000 2000. ऑप्शन ही नहीं है पायल 2000। Okay, अच्छा 2000 ऑप्शन नहीं है. सर इसमें ऐसा बताया Alexa मतलब to say. एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट ज्यादा है क्या बोलना था क्वेश्चन नहीं समझ आया Okay, let's see. तो यहाँ पर पूछा हुआ है if the trade deficit it is defined as the excess of imports over exports. Right. So trade deficit की बात हो रही है. Trade deficit is equals to imports minus exports. ठीक है, इसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं. इकोनॉमिक की टर्म्स में हम इसको यही चीज बोलते हैं. तो ये चीज हमें दी हुई है. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई इन विच ईयर ट्रेड डेफिसिट इज 1/5 ऑफ द एक्सपोर्ट. So you have to find out the ratio of trade deficit upon exports. You have to identify these things for the given options. And इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 1/5 के 1/5. इसके बराबर होनी चाहिए. Basically it is saying that trade deficit should be equal to 1/5 of the exports. 1/5 of exports. Exports को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देता हूँ. If I find out this ratio, it should be 1/5. A option जो है 2005. Let's try to do it for the same. So 2005 यहाँ पर है आपका. Imports 90, exports 70 upon exports 70. B 2004, imports 80, exports 60 upon exports 60. C 2007, imports 120, exports 110 upon exports 110. D 2006, imports 120, exports 100 upon 100. सर 20 2004 by में 7. 70 आएगा 4 yes 70.
It will become 10 by 1 by 7, 10 by 70. This becomes 10 by 110. This becomes 20 by 100. If you solve an up, you will get the answer. This becomes 2 by 7. This becomes 1 by 7, 1 by 11, and 1 by 5. You got the answer. Answer is D. Right. Only you have to solve it for the options given in the question. बाकी 2000 also will give the answer. I guess. नहीं 2000 में वहाँ पे नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, उल्टा आएगा. उल्टा आएगा. Okay, next question. Now related to probability. Again, a simple question for 2 marks. One by two. C. Okay, let's see what can be the answer. You are given 3 coins. One has heads on both the faces, second has tails on both the faces, and the third has head on one face and tail on other face. You can choose a coin at random and toss it. It comes up heads. Now what is the probability that the other face is tail? ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि भाई अदर फेस जो टेल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो बेसिकली मेरे पास 3 ऑप्शन है. ठीक है, आई हैव 2 हेड्स, आई हैव 2 हेड्स, 1 हेड एंड 1 टेल. ठीक है, तो अब मैंने कॉइन को टॉस किया. आई गॉट हेड. ठीक है, नाउ 1 हेड आई गॉट. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर फेस इज टेल? So I can have 3 options, right? I can have 3 options in total. मेरे पास 3 total options है. Total number of outcomes मेरे पास कितने हैं? 3. Basically यहाँ पर आपको क्या बताना है? So if you are choosing a coin, if you are choosing a coin and it comes up as a head, and the probability that the other face is tail, so you have to tell what is the probability of getting what is the probability of getting a coin which is having 1 head and 1 tail. ठीक है, I hope this thing is clear. Question simple सा है. What it is talking about is you had to identify the probability of the coin which is having 1 head and 1 tail. क्योंकि एक head तो आपके पास आ चुका है, that is for sure. Now what is the probability that the other face is tail? So how many options do you have? You have 3 options. Total number of outcome, and the favorable outcome is 1. So it will become 1 by 3. Right. So basically it is talking about probability of choosing 1 head 1 tail coin. That is 1 by 3. The correct answer will be 1 by 3. सर पर सेकंड ऑप्शन तो निकल ही जाएंगे ना, मतलब पहले हेड तो आ गया तो उसमें तो दोनों साइड टेल ही है ना. नहीं, एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि आप आपका जो हेड है वो हमने जो कॉइन चूज किया हुआ है दैट कैन बी हेड और टेल. ठीक है, ये उसका दूसरा हेड है या उसका नहीं. और इनकेस अगर आप वैसा ही मान रहे हो कि अगर सेकंड ऑप्शन निकल जाएगा, मतलब 2 टेल वाला ऑप्शन निकल जाएगा, ऐसा बोल रहे हो आप? यस सर. एक सेकेंड. यस, इट कम्स अप एज अ हेड, मतलब तो हमने. ये तो नहीं हो सकता. हाँ, सो इट शुड बी 1 by 2, राइट? दैट्स करेक्ट. यस सर. हाँ, तो यहाँ पर ऐसे देखा जाएगा दैट दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. So if 1 is head, what is the probability the second is tail? It is only 1, and total option is 2. You are left.
because this thing is come. Okay, thanks for correcting. This thing is there, it comes up as head. So your correct option will be 1 by 2. See. Next one. Again, similar to what we had done in the earlier uh, question, वही आपको करना है, सेम चीज करनी है. जस्ट द डेटा हैज बीन चेंज. और ये तो गेट वालों की फेवरेट चीज है कि वो जैसे सेट चेंज होता है वो डेटा चेंज कर लेते हैं. जैसे ब्रांच चेंज होती है वैसे वो क्वेश्चन का डेटा चेंज कर लेते हैं. आई क्वेश्चन इज सेम. ट्राई टू सॉल्व दिस वन. ऑप्शन सी. Okay, let's see what can be the answer. So Q, W, Z, B. What is the difference over here? Let's find out the number. $17. 23. 23. Then this will be 26. Last one and 2. So 6, 3, then 2. Second, B, H, K, M. 2, 8, 11. 11, 13. 13. So 6, again 6, 3, 2. Same. W, C, G, J. So W, 23, C, 3, G, 8, sorry, G, 7, and J, 10. 10. 6 again, 4, 3. This is change. So this will become the correct answer. लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं. MSV X. M becomes your 13. 13. S 19. 19. 22. 22 and 4. 4. So 3, sorry 6, 3, 2. एक में पैटर्न चेंज हो रहा है. That will be the correct answer. सर ये समझ Okay, नहीं next. आ रहा, मतलब पता कैसे चलता है कि ओड है या इवन? See, यहाँ पर you have देखिए इसको करने के दो तरीके. You can take your finger and आप काउंट कर सकते हो. देखो Q R S T U V W. 6 नंबर के बाद W आ रहा है और उसको मैंने नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ये तो मेरे को इजी पड़ा. बाकी आप फिंगर से भी काउंट करोगे तो भी यू विल गेट द आंसर. क्यू के बाद फिंगर से काउंट करो RSTUVW तो 6 नंबर आएगा. देन डब्ल्यू के बाद XYZ तो 3 आया. जेड के बाद वापस से ए से चालू होगा तो AB 2 आया. तो सेम थिंग यहाँ पर मैं नंबर के फॉर्म में कर रहा हूँ और कुछ नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज यहाँ पर जो भी अल्फाबेट है उनको मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ सो दैट माय कैलकुलेशन बिकम्स इजियर. ठीक है. और उसी का शॉर्टकट मैंने आपको इससे पहले डिस्कस किया था. ओके सर. नेक्स्ट वन.
Now this is a simple question. वन सिक्सटी थ्री. Okay, let's see what can be the correct answer. The sum of 8 consecutive odd numbers is 656. ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था ये कैसे करना है. ए 8 है ना यहाँ पर, तो a-2d, a माइनस, अच्छा a-4d, a-3d, a-2d, a-g, 4, 5, 6. अच्छा यहाँ पर कुछ गलत हुआ है. दिस वन, डी तो हमारे पास कांस्टेंट है ना, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर नंबर. अब चार दो आगे ले लेते हैं, a+2, a+4, a+6, a-2, a-4, a-6, a-8. तो ये हो गए, ये सब मेरे पास हो गए. इसका सम निकालना है हमें. तो आई विल गेट 2a-8 is equals to 656. This will give me the center number. So a will be 664 divided by 2 will become 332. सर 8 आएगा ना, 8A. Yes, sorry, 8 है. So divide by 8 होगा. So it will become 83. Yes, no, it's 80. So 83 is your middle number. You have to find out some of the smallest odd numbers. So 83 minus 8. So smallest will be 75. 83 minus 8, that is 75. The first part. Second part is about the largest. The sum of 4 consecutive even numbers is 84. So again 8 minus 2, a minus, or a-4, a-2, a plus 2. Sum लेंगे तो 4a minus 4 is equals to 87. Right, or 4a is equals to 91. 91. a यहाँ पर just one. Okay, that's my mistake. सम नहीं, एवरेज दिया हुआ है, so I take the average. So 4a minus 4 divide by 4 is equals to 87. 4a minus
और to 88 87. AECT. Okay, got the answer. Yes. So you got the answer. A equals to 88. अब जो यहाँ पर हमें निकालना है लार्ज सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर, सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर इज 88 ओनली. So you have to find out 75 plus 88. Therefore required number is 75 plus 88. 163. Yes, that's correct. 163. क्वेश्चन सिंपल है, जस्ट लेबरियस है, मेहनत करनी पड़ेगी एंड देयर हाई चांसेस दैट वी कैन मेक मिस्टेक ओवर हियर. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन बड़ा. ट्राई टू सॉल्व दिस वन. ऑप्शन डी. ओके, आइटम 3. Let's see what can be the answer. The total exports and revenues from the export of a country are given in two charts. The pie chart for export shows the quantity of each item exported as the percentage of total quantity of exports. The pie chart for revenue shows the percentage of total revenue generated through the export of each item. The total quantity of export, अब यहाँ पर quantity दी हुई है, ठीक है, quantity is 5,000 tons. So 5,000, 500,000 tons. 500, 5 into 10 raised to 3, 500,000 tons. And the total revenue is 250 crore. Which item among the following has generated the maximum revenue per kg? ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो रेवेन्यू निकालना पड़ेगा दैट शुड बी पर केजी, इन टर्म्स ऑफ पर केजी. अब हमें यहाँ पर रेवेन्यूज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिए हुए हैं, ठीक है. टोटल रेवेन्यू इज 250 करोड़ रुपीज एंड आउट ऑफ दिस परसेंटेज इज गिवन ओवर हियर. तो हमें चार चीजों के लिए निकालना है. लेट्स गो वन बाय वन. फर्स्ट इज आइटम 2. तो अगेन इफ यू फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू या पर केजी रेवेन्यू निकालोगे, बात एक ही आएगी, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर. आइटम 2 के लिए हमारा 20% है, सो यू हैव टू फाइंड आउट 20% ऑफ 250. लेट्स लीव करोड़ रुपीज ओवर हियर फॉर अ वाइल. आइटम जो हमारा 3 है दैट इज 23. तो 23% ऑफ 250 करोड़ is item 6. Now item 6 is 16% of 250 crore and D is item 5. Item 5 is 20% of 250 crore. Just 1 minute. Okay. Now yes. Now we have to identify कि कितना यहाँ पर
सेल हुआ था, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज बीइंग सोल्ड, एक्सपोर्ट कितना हुआ था दैट वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस ग्राफ. सो फॉर आइटम 2, if you see 20% has been sold, so 20% of quantity is 500,000 tons. So I'll just keep it 500 to keep the units short over here. 23% था, so 23% of 250 divide by per kg है, so again 500, और कितना है आइटम 3 का, आइटम 3 है 19%, so 19% of 500. Similarly over here आइटम 6 की अगर मैं बात करूँ, आइटम 6 है यहाँ पर 16%, so 16% of 500, and the last one 20% of 250 upon आइटम 5 है हमारे यहाँ पर 12%, so 12% of 500. ये 4 परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने हैं, and you have to find out the smallest of the answer. Sorry, maximum answer. So this will actually become 1 by 2. अगर आप इसको कट करते हो, this will become 23 by 38. This will again become 1 by 2. This will become 20 by 24. Right? ये आपको तो ये 1 by 2 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 से ज्यादा है, and this is, if you cut it out, it will become 5 by 6. So I guess D will be the correct answer. If you find out these ratios, 5 by 6 will be greater than 23 by 38. So your correct answer is going to be item D. I have not taken the units as of now. यहाँ पर units मैंने नहीं ली हुई है, वरना you have to take in tons, then you have to convert it in per kg. Similarly, this crore rupees you have to multiply it by 10⁷, and you have to solve it up. But अभी मैंने assume कर लिया कि भाई जो units हैं वो cancel हो जाएंगी. So we can simply find out the ratio and find out the answer quickly. Right. So the correct answer is going to be D. Next one. Simple one. Option B. Okay, let's see what can be the correct answer. Yes, The next term in the option sequence. B. Okay. Next term in the sequence. So 7 plus 4 we have, sorry, 7 plus 4 is 11, and then 2. Okay. So and then we have to identify what is the next one. Okay. So just 1 minute. Yes. So 7 G. G turns out to be your 7. Okay. 11 is, yes, 11. This is K is also 11. 13, M is 13. O is 15. So M is 13. So what is the number of Q? 17. 17. So this turns out to be the correct answer. Number of P? 16. 16. So none of them is correct.
So 17Q, that's the correct answer. Very good. Okay, next one. Yes, a multi-level hierarchical pie chart shows the population of animals in a reserve forest. The correct conclusions you have to find out. It's option B. B or D? Ball B. Okay, let's see. So you had to come up with the conclusions. The butterflies are birds. So, do I have butterflies? Yes, butterflies, and they are a part of birds. So this is correct. One is going to be correct. There are more tigers in the forest than the red ants. Tigers and red ants. So red ant यहाँ पर है मेरे पास, tiger यहाँ पर है. Obviously, tiger looks bigger than the red ant, so that is correct one. All reptiles in the forest are either snakes or crocodiles. Reptile वाला जो है उसके अंदर दो ही option है मेरे पास, snake, crocodiles. That is also correct. Elephants are the largest mammals in the forest. Elephants are the largest mammals in the forest. No, it has not been explicitly mentioned कि elephant जो है वो, see, yes, obviously elements are the largest mammals in the forest, that we can give a conclusion, but we cannot give the correct conclusion from this information. यहाँ पर कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है that elephants are the only ones who are largest. ठीक है, so fourth is something which is not actually clear. Let me check the answer first, then I'll give you the final one. Yes, it also says that the correct answer is uh, D. 1, 2, and 3. 4 is not included. Elephants are largest mammals on the forest. It is not mentioned anywhere. So we cannot draw this conclusion. It is not given. So 1, 2, and 3 only. That is what we can draw from this chart. Okay, let's look into the next one. Simple question. जल्दी हो जाएगा, I guess. Four kilometers per hour. Okay, that's correct answer. 4 kilometers per hour. So a man can row 8 kilometers per hour in still water. So speed of man is given, right? That is 8 kilometer per hour. Speed of stream not given. Or let's say velocity. Velocity of stream is not given.
It takes twice as long to row upstream as to row downstream. What is the stream velocity per kilometer per hour? So time has been given. Okay, time is equals to 3 times. So time for downstream, time from upstream, it is 3 times the time for downstream. So time is equals to distance upon speed, okay, or velocity. So velocity in case of upstream will be against the stream. So velocity of men minus velocity of stream. It is equals to 3 times downstream. So velocity of men plus velocity of stream. So d will get cancelled. You will get velocity of men plus velocity of stream is equals to 3 times velocity of men minus velocity of stream. Now velocity of man it has been given, so 8 plus Vs is equals to 3 Vm minus 3 Vs, or Vm is 8. If you solve it up, you will get 4 Vs is equals to 16, or velocity of stream comes out to be 4 kilometers per hour. A pretty simple question asked for 2 marks. So boat and stream, that's why it becomes an important topic. इस सिंपल से क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं. Yes, next one. ऑप्शन बी सर. Option B. Why so? उल्टा पढ़ना है, मतलब आधे 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 अक्षर उल्टे पढ़ने हैं, Yes, ऊपर भी that's ऐसे. correct. Very good. Yes, that's correct. है क्या, अगर आप बेस्ट ऑफ लक देखते हो तो यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक उल्टा लिखा हुआ है, खाली वॉवल्स नहीं है. तो ई एलिमिनेट कर दो तो बी एस टी आ गया, ओ एलिमिनेट कर दो तो ऑफ आ गया, एंड यू एलिमिनेट कर दो एल सी के आ गया. राइट, सो दैट इज रिवर्स ऑफ द अल्फाबेट्स. रेयरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2014. ठीक है, जी डी आ गया, ओ चले गए, आई चला गया तो डब्ल्यू आई एस, एच आया, ई चला गया वापस आ गया, वॉवेल्स को हटाकर उल्टा लिखा हुआ है. इजी एग्जाम अगर आप डायरेक्टली देखना चाहो तो ए ई चला जाएगा, ई चला जाएगा, ई चला जाएगा, ई चला जाएगा. सो विल गेट सी टी एच एक्स एम, एम एक्स एच टी सी. बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट. सो रिवर्स विदाउट वॉवेल्स. कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, दैट्स देयर चॉइस, कुछ भी बन सकता है वहां पर, बट ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको जितने ज्यादा पैटर्न बताओगे आप हर एक चीज आइडेंटिफाई कर पाओगे एग्जाम. नेक्स्ट वन, एंड दिस इज लास्ट वन फॉर टुडे.
Yes, can I get some answers? Sir, 1 minute. Go by the options. You cannot actually find out the exact answer. Like finding out the exact answer is difficult in this case. So you can go by the options. Options will give you the correct answer. Sir, option B. 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 Okay. Okay. Let's see how we can come to the answer. So, Anuj, Bhola, Chandan, Dilip, Ishwar, and Faisal live on different floors in a six-story building. The ground floor is one. So, ground floor is one, two, and so on. We have six numbers. Anuj lives on an even numbered floor. Anuj की बात करते हैं. So, Anuj lives on even number floor. Six, two, four, all are even numbers. So that has been covered. And the first sentence has been covered, and it is correct for all the options. Bhola does not live on odd number floor. So Bhola odd number पे नहीं है, मतलब वो भी even पे ही है. So Bhola 2, 6, 2, 4. Yes. All the options are correct. Chandan does not live on any of the floors below Faisal. So Faisal के नीचे नहीं है, Faisal से ऊपर. Faisal का अगर 4 है, ये 5 है. 4 है तो 5 है. 5 है तो 6 है तो 6 है. So all these are correct. Right. So Chandan के लिए भी अगर सब मैं 4 correct मान के चल रहा हूँ. Then next is Dilip does not live on floor number 2. So 1131 ये भी सब सही है. It does not live on floor number 2. Now next one. Ishwar does not live on the floor immediately above or immediately below Bhola. If I talk about Bhola, ईश्वर इमीडिएटली अबव या इमीडिएटली बिलो नहीं है. तो ये वाला ऑप्शन में क्या है, 2 से 3 जा रहा है. तो दैट मींस इमीडिएटली अबव. तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. 6 3 इट साउंड्स करेक्ट. देन 2 1 इमीडिएटली बिलो गया ऑप्शन ये भी. एंड नेक्स्ट इज 4 3 अगेन इमीडिएटली बिलो. ये ऑप्शन भी गया. सो यू हैव ओनली बी ऑप्शन लेफ्ट ओवर हियर. एक ही लाइन है जिसने सब कुछ आंसर बता दिया. दैट ईश्वर डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो. Faisal lives 3 floors above Dilip. Now this is just to confirm. So Dilip first पे है, Faisal fourth पे. So that's correct. So option B is going to be the correct answer. Right. So in this such kind of questions you can go as per the options. और जो डेटा दिया हुआ है उसमें what I think is only one data is important. तो अगर आप इसी की बात कर ले तो यही चीज आपको सब कुछ दे देती है. Rest nothing is much of the important over here. And yes, this is the last question we are going to cover today. So if you have any doubt, you can stay or you can leave. Thank you so much. Try to solve this one. ये बहुत simple question है.
Sir, 180 degrees. Okay, let's try to solve this one. What has been given is the smallest angle of a triangle is equal to the two-thirds of the smallest angle of a quadrilateral. Okay, angle of the triangle and the smallest angle of quadrilateral, that is what we are concerned about. ठीक है, ये दो चीजें हमको निकालनी पड़ेगी. Now if I start with the first part, that is the ratio between the angles of quadrilateral are 3, 4, 5 and 6. 3 is to 4 is to 5 is to 6. So what we'll do is जब भी ratio आता है हमारे पास हम assume करते हैं. So I'll assume that the angles are 3x, 4x, 5x and 6x. Let the angles be 3x, 4x, 5 and 6x. Now we know that the sum of angles of a quadrilateral. Yes, what is the sum of angles of a quadrilateral? 360. Yes, that's correct. Quadrilateral is something made up of four sides. So four side होगा तो angle का sum 360 होता है. So you'll get 3x plus 4x plus 5x plus 6x. This is equals to 360 degree. It will turn out 18x is equals to 360 degree or x is equals to 20 degree. Once you get this part, you can easily identify the angles of the quadrilateral. So angles क्या होंगे हमारे पास 3x, 4x, 5x, 6x. 3x will be equivalent to 3 into 20, that is 60 degree. 4x will be equivalent to 4 into 20, that is 80 degree. 5x 100 degrees and 6x हो जाएगा हमारे पास 120 degree. Now the smallest angle of the triangle, it is equal to two-third of the smallest triangle of the quadrilateral. If I talk about smallest angle of triangle, it is two-third times the smallest angle of the quadrilateral, that is 3x. So it is basically 2 times x. X is 20, so it will become 40 degree. Now what you are supposed to find out is, you are supposed to find out the sum of the second largest angle of the triangle and the largest angle of the quadrilateral. Okay. Just 1 minute. Is there any data missing? Okay, yes, it is given. The largest angle of the triangle is twice its smallest angle. So largest angle will become the smallest angle of triangle we have obtained. The largest triangle, so largest angle of triangle, it is twice the smallest angle, that is 2 times 40 degrees, so 80 degree. Right, so you got the largest, you got the smallest. The third angle of triangle will become 180 degree minus 80 plus 40, which will become 60 degree. Now this is the second largest angle. Now I can identify the sum in degrees of the second largest angle of the triangle. Second largest angle is 60 degree and the largest angle of the quadrilateral, largest angle of quadrilateral is 120 degrees. So 60 plus 120, that is what I need to identify. The answer will be 180 degrees. अच्छा क्वेश्चन है, although it is very simple, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. बट द थिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई इसमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी. दैट इज द थिंग कि थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा एंगल कहाँ पर है, क्या है. लेट्स ट्राई द सेकंड वन. द आंसर विल बी 60 plus 120 degree, that is 180 degree. Next one, try this one.
Yes, can I get some answers over here? Sir, just a minute. Okay, let's start solving this one. देखते हैं तब तक आपका आंसर भी आ जाएगा जिसका बाकी है. 1% of the people of country X are taller than 6 feet. 2% of the people of the country Y are taller than 6 feet. दो कंट्रीज की बात हो रही है X और Y. There are thrice as many as people in country X as in Y. So I'll start with assuming the smaller one. Let number of people in country Y be 100. ये हमने अज्यूम कर लिया जो हमारी स्मॉलेस्ट कंट्री जिसमें कम नंबर ऑफ पीपल है. So the number of people in country X, it will become thrice of that of Y. Number of people in country X, it will be thrice, that is 300. Now let's talk about the number of people taller than 6 feet. Number of people taller than 6 feet. If I talk about country X के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, that 1% of the people. So 1% of 300, that will be 3 people. वहीं पे अगर मैं कंट्री वाई की बात करता हूँ तो वहां पे मुझे दिया हुआ है 2%, लेकिन हमने कितना अज्यूम किया हुआ है 100. तो 2% ऑफ 100, सो दैट इज 2. सो टोटल पीपल कितने हो जाएंगे, फॉर टोटल वी हैव 5. Now what we need to find out is, taking both the countries together, what is the percentage of people taller than 6 feet. So I need to find out what will be the total population. The total person हो गए that are taller than 6 feet, and total population of X and Y, it will become 400. It will become 300 plus 100, that is 400. Therefore required percentage will be, it is going to be 5 upon 400 into 100. We'll get an answer 1.25 percentage. Very simple question. Only thing that you need to know is कहाँ पर क्या assume करना है. Let 5 by 4 is 1.25. Okay. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, so you can understand कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था. The only thing is अगर आप लॉजिक समझ लेते हो, so it becomes very very easy. Next one. This is related to data sufficiency. Sir, option A. Okay, let's see how we can approach to this kind of question. Is this correct answer? So let's see. So हमारे पास 4 children है group है, in a group of 4 children. Som is younger to Riyaz, Shiv is elder to Anshu, and Anshu is the youngest in the group. We have to identify like which statement will be enough to find the eldest child in the group. तो पहले हम देख रहे थे कितना डेटा दिया हुआ है हम.
तो अंशु के बारे में दिया हुआ है, अंशु इज द यंगेस्ट, तो ये तो सबसे छोटा है। शिव इज एल्डर देन अंशु, सो शिव जो है वो अंशु से बड़ा है, दैट इज गिवन टू यू। सेकंड थिंग इज गिवन इज सोम इज यंगर देन रियाज, so रियाज इज गोइंग टू बी एल्डर देन सोम। सो अगर हमारे पास एक और डेटा दिया जाए जिसमें शिव अंशु की या सोम शिव की बात की जाए, तो दैट विल बी इनफ। तो अगर यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट की मैं बात करता हूँ, शिव इज यंगर देन रियाज, तो शिव अगर रियाज से छोटा है, ठीक है, सो रियाज इज एल्डर देन शिव और शिव इज यंगर देन रियाज। यहाँ से मुझे मिल गया देखो कि रियाज जो है वो सोम से भी बड़ा है, रियाज जो है वो शिव से भी बड़ा है, और अंशु तो सबसे छोटा ही है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा दैट रियाज इज द एल्डेस्ट वन। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज इनफ टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे बस हमारा एल्डेस्ट ग्रुप एल्डेस्ट चाइल्ड कौन सा है। If it has been given that the Shiv is elder to Som, Shiv is, अगर मैं दूसरे के सेंटेंस की बात करता हूँ, Shiv is elder to Som, ठीक है, तो शिव जो है वो सोम से बड़ा है और रियाज भी सोम से बड़ा है, सो नोबडी नोज वेदर रियाज इज एल्डर और शिव इज एल्डर ऑफ ऑल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें इनका रिलेशन दिया हुआ है। तो दैट सेकंड सेंटेंस वोंट बी एक्चुअली इनफ टू आइडेंटिफाई कि कौन एल्डेस्ट है एल्डेस्ट, सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट वन, राइट, दैट शिव इज ग्रेटर देन रियाज। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन आस्क फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट वन, सर ये 1 किलोमीटर। सॉरी हाउ मच? ऑप्शन ए 1 किलोमीटर। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्या आंसर आएगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन द डायरेक्शंस ओवर हियर सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये आ गया आपके पास ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस बिकम्स योर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो जस्ट अ डायरेक्शन चार्ट। आगे बढ़े तो x is 1 kilometer northeast of y. First, x is in the northeast direction of y. तो अगर मेरा y यहाँ पर है, x कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाती है, तो यहाँ पर आपका x है। कितना डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर।
यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दैट x पहले दिया हुआ है या y पहले दिया हुआ है, दैट विल चेंज द होल आंसर. So if y is north east of x, वो अलग डायरेक्शन होगी, x is north east of y, that is different thing. Now y is 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ z. साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहा है. तो y इस डायरेक्शन में है. सो बेसिकली दैट बेसिकली मीन्स कि यहाँ पर अगर z है तो z की आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आते हो तो आपको y मिलेगा, राइट. सो दिस बेसिकली मीन्स ये दोनों एक लाइन में ही होंगे, राइट. ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. नाउ p इज, अच्छा इससे पहले एक सेंटेंस दिया हुआ है, w इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ z. तो इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ z, वेस्ट मतलब इस साइड में अगर आप जाते हो 1 किलोमीटर, go 1 kilometer on this direction, you will get W. Right now, P is 1 kilometer south of W. So P is 1 kilometer in this southern direction. नीचे की तरफ है. W से नीचे अगर हम जाते हैं 1 किलोमीटर, तो here you will get P. This is also 1 kilometer. This is also 1 kilometer. Now you have to identify what is the distance between X and Q. Okay, sorry, एक चीज रह गई शायद. Q is 1 kilometer east of P. Q in the east direction. East direction. तो P से अगर मैं ईस्ट पे चलता हूँ कितना, 1 किलोमीटर, ओवर हियर 1 किलोमीटर में यहाँ पर आता हूँ, आई विल गेट Q. नाउ आई टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Q. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे निकालना है. तो हाउ वी कैन डू दैट, आई विल जस्ट ड्रॉ दिस लाइन ओवर हियर. 1 किलोमीटर में थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ. दिस इज 1 किलोमीटर. So basically, first of all, from X, Y, Z, this triangles में से from this triangle I need to find out XZ. Find XZ. Now once I get XZ, I'll go to triangle QZX and वहां से हम find करेंगे XQ. Right? these दो चीजें हम find करेंगे. So let's try to see how we can do that. First of all, you need to understand that XYZ के बीच में जो एंगल होगा that will be 90 degree. Right? Because ये दो डायरेक्शंस जो हैं, एक है आपकी नॉर्थ ईस्ट, दूसरी है साउथ ईस्ट, तो ये दोनों हमेशा 90 डिग्री में होंगे. सो यहाँ पर आपको ये जो एंगल मिलेगा दैट विल बी इन एट 90 डिग्री. सो ये 90 डिग्रीज आ गया, तो एक्स वाई जेड विल बिकम अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, पाइथागोरस अगर हम यूज करते हैं, विल गेट एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर. So xz square, obviously it is going to be 1 square plus 1 square. That basically means xz will be equal to root 2 kilometer. Now you got this answer. अब आपको जाना है इन ट्राइंगल क्यू जेड एक्स. इस पे भी सेम चीज है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री मिल रहा है. So this 90 degree you can use to apply the Pythagoras theorem. You will get qx square equals to qz square plus zx square. Sorry. Now in this case, pw is going to be equal to zq. तो qz की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, जिसका स्क्वायर होगा, एंड xz की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली है ऊपर, दैट इज रूट 2. सो अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन x एंड q. So qx square is going to be equal to 1 plus 2, that is qx is going to be under root of 3. So correct answer will be under root of 3. And I hope this thing is clear. The only thing you need to understand कि यहाँ पर जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री होगा. अगर आप इसको 60 लेकर चल रहे हो तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा. Right. So in any of the two lines over here, you will get 90 degrees. This kind of questions, rather than calling them to be a part of quantity aptitude, ये logical reasoning के अंदर आते हैं, जिसको हम direction sense बोलते हैं.